Good morning, and today's topic is the structure of the atom. In fact, it is the new chapter that I'm going to start, and it is also the last chapter of chemistry. So, structure of the atom. And for this, before starting this topic, I want to let you know that John Dalton, who proposed atomic theory, John Dalton, what he proposed that matter is made up of very small particles called atoms which cannot be divided further. But this point, this postulate is no longer valid because we came to know that atom consists of still smaller particles which are actually subatomic particles, and they are what? Subatomic particles which are present in an atom, and they are what? Electrons, protons, and neutrons, right? And neutrons. So if we will talk about these subatomic particles, obviously we will be going to discuss in brief. Not really, we are not going to discuss this year about the discovery, how the discovery happens, but we are only concerned with their properties, what are their characteristics in fact. So पहले हम ये समझ लेते हैं कि सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस बहुत छोटी सी होती है और उसमें देयर आर स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस. से ये प्रोटॉन है, पॉजिटिवली चार्ज्ड, और मैं ब्लू से दिखा देती हूँ से न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स तो ये क्या होते हैं? ये दे आर प्रेजेंट इन द nucleus of the atom. Protons carry positive charge, neutrons carry no charge, and nucleus is very small in comparison to the size of the atom. ठीक है, पूरा एटम ये जो है. और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं which are negatively charged, they revolve around nucleus in their respective shells. Okay, discrete orbits में revolve करते हैं इलेक्ट्रॉन्स. तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट लेट मी टेल यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. ओके, सो symbol for electrons, I am starting with electron. Symbol of electron is what? E लिखा आपने ऐसे and put minus sign. ठीक. Charge on proton is 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम. ओके, और यहाँ माइनस लगा देंगे हम. इट मीन्स -1. ये किसके बराबर है? -1 यूनिट. ओके, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल. 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg. Location where electrons are present in. Location is outside the nucleus, extra nuclear part, outside the nucleus. Okay, protons, they can be denoted as small p with plus sign. Charge is equal, okay, but there's a difference in sign. 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, which is plus 1 unit. Okay, mass of proton is 1.67 into 10 raised to the power minus 27 kg, and they are present in the nucleus. Protons are present in the nucleus. Now neutrons. Neutrons have no charge and not, एन पे 0 आप ऐसे लगा सकते हैं, मीन्स न्यूट्रल. ठीक. कूलम्स ऑफ चार्ज, कितना कूलम है? 0.00 कूलम, मीन्स नो चार्ज.
Okay, mass is almost equal to that of proton, but it is slightly heavier, which is 1.674 into 10 raised to the power minus 27 kg. And neutrons are also present in the nucleus. ओके अगर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते तो प्लस प्लस चार्ज ऑब्वियसली रिपेल होता, तो इट इज़ एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस ऑल्सो. ठीक है, आगे और क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो अभी बहुत कुछ पढ़ने के लिए बाकी है कि प्रोटॉन्स भी किसके बने, न्यूट्रॉन्स किसके बने हैं, चार्ज इतना 1 यूनिट क्यों आ रहा है. ठीक है, तो लोकेशन तो हमारी ये हो गई. आप अब इफ वी विल कंपेयर, आप इजीली देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलमोस्ट 1/1840 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन, मीन्स ऑलमोस्ट 2000 टाइम्स लाइटर देन प्रोटॉन. तो प्रोटॉन्स आर दैट मच मैसिव. ओके, इतने हैवी हैं. दैट इज वाई प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन मास इज यूजुअली निग्लेक्टेड. नाउ डिस्कवरर और देख लेते हैं. Electrons were discovered by J.J. Thomson. Protons E. Goldstein. कोई भी इस पर हम एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं. एंड न्यूट्रॉन्स बाय जेम्स चैडविक. सबसे लास्ट में न्यूट्रॉन्स ही डिस्कवर हुए बाय जेम्स चैडविक. सो दिस इज हाउ यू कैन नो अबाउट कि सबएटॉमिक पार्टिकल्स क्या है. एक बार फिर से बता देती हूँ. दिस इज योर न्यूक्लियस और ये आपकी शेल्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. ठीक है, इस तरह से करके. लेट मी ड्रॉ. नाउ देयर आर few points before drawing the structure of the atom. I want to explain you these points, then we will come to the energy shells. Okay, first of all, an atom is made up of 3 particles called electrons, protons and neutrons, which we have studied just now, right? The protons and neutrons are located in the nucleus of the atom. So nucleus is what? It is positively charged. Why positively charged? Because neutrons carry no charge. They are neutral. So this is actually the contribution of protons which is giving nucleus a positive charge. And we know that atom as a whole, atom is electrically neutral. Why? Because number of protons is equal to number of electrons in the atom. Okay, in the neutral in electrically neutral atom, number of protons is equal to number of electrons. Electrons carry negative charge, protons carry positive charge. So when the sum of the positive charge and sum of negative charge is going to be equal, मीन्स अगर 6 प्रोटॉन्स हैं न्यूक्लियस में और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है बट प्लस माइनस का डिफरेंस है. सो दे विल नलिफाई ईच अदर्स इफेक्ट एंड द नेट चार्ज ऑन एन एटम विल बी 0. ओके, the electrons revolve around the nucleus in fixed circular paths called energy levels. जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया था कि electrons कैसे, suppose this is the nucleus and electrons revolve around nucleus in these circular path. Okay, and we can name these energy levels or energy shells by number 1, 2, 3, 4 and so on, or by letter K, L, M, N, etc. Okay, so the numbering is it starts from the center outwards. यानी न्यूक्लियस के बाद पहला जो नंबर होगा दिस इज 1. ठीक है, वो किस शेल का होगा? के शेल. देन सेकंड शेल एल शेल, इसको आप 2 नंबर दे दीजिए. ठीक, ऐसे कर दीजिए. थर्ड M. Okay, fourth shell N.
and so on. There is a limit to the number of electrons which each energy shell can hold. Number of electrons की एक लिमिट होती है जो कि हर शेल होल्ड कर सकती है टू द मैक्सिमम. दिस आई विल टेल यू. और एक चीज़ हमें याद रखनी है, जितना न्यूक्लियस से पास होगी शेल उतनी उसकी एनर्जी कम होगी, जितना दूर होगी उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी. न्यूक्लियस से शेल दूर जाएगी उतनी ही उसकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी. So this number of electrons, maximum electrons that can be accommodated in a shell is given by the formula. Let me write. Maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is given by formula 2n square, where n is this number. अगर आप के शेल की बात कर रहे हैं, शेल का नंबर है. अगर आप के शेल की बात कर रहे हैं तो 2, के की वैल्यू 1 होगी, तो 2 इंटू 1 स्क्वायर विल बी 2. ठीक. अगर आप एल शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं. अगर आप एल की बात करेंगे तो एल में कितने आ सकते हैं, 2 इंटू 2 स्क्वायर, जो कि कितना होगा 2 इंटू 4 विच विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम. एम में 2 इंटू 3 स्क्वायर, 2 इंटू 9 मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स. ओके. और एन में हम देखेंगे तो 2 इंटू 4 स्क्वायर, 2 इंटू 16 दैट इज 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम. लेकिन हम जो हमारे सिलेबस में है वो 18 एटॉमिक नंबर तक है, वो आप ये देखेंगे. और 1920 का भी मैं आपको सिखा दूंगी. ठीक है. तो 18 इलेक्ट्रॉन्स तक हम लास्ट उसमें देखेंगे, लेकिन हम जो पढ़ेंगे वो 18 नहीं पढ़ेंगे. वो आपको मैं आगे बताऊंगी कैसे, कि 18 इलेक्ट्रॉन्स कैसे नहीं आ सकते. सो दिस इज द रूल. और लास्ट अगर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें क्या होंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 8 हो सकते हैं लास्ट उसमें आप अगर पढ़ेंगे. ठीक है. सो और एक और पॉइंट, दैट देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लॉन्ग एज दे आर they are revolving in the same energy level. ठीक. तो हमें इससे क्या पता चला कि शेल में 2 आ सकते हैं. ठीक है. एल में 8 आ सकते हैं मैक्सिमम. इस तरह से करके एम में 18 आ सकते हैं, एम में 32. तो कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसमें दिस विल बी मोर क्लियर. ठीक है. हम किसकी बात करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स, देन एल में भी 8 और एम में भी 8. ओके. 18 एटॉमिक नंबर तक.